Good afternoon, students. This is our next lecture on unit number 3. Today we see our next topic, that is evolutes. Now, first of all, we see the definition. Evolute means the locus of the center of curvature. Locus of the center of curvature of the curve is called evolutes. Now, what is meant by evolute? Center of curvature, locus of center of curvature. It means that what we have to obtain? We have to obtain the center of curvature first. Okay, that is called as evolutes. Now, suppose x and y be the center of curvature of the curve y is equal to f of x, then evolute of the curve is obtained by eliminating x and y with the help of these two formulas. देखो, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, तो हमारे इवोल्यूट्स क्या मिलेंगे? इवोल्यूट्स मीन्स हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट एलिमिनेट x एंड y. हमें सिंपली क्या करना है? x एंड y एलिमिनेट करना है. ये दो फॉर्मूले अप्लाई करना है और x एंड y एलिमिनेट करना है, एंड दैट इज आवर इवोल्यूट्स. ओके, वी सी द एग्जांपल. हाँ, बिफोर दैट dy by dx can be also written as y dash, and d2y by dx square can be written as y double dash. Suppose we write dy by dx as y dash and d2y by dx square as y double dash, then our formulas are x is equal to small x minus dy by dx is y dash into 1 plus y dash whole square divided by y double dash. And what is y? Y is y plus 1 plus y dash square upon y double dash. And with the help of these two formulas, we can obtain the evolutes of the given curve. Okay. Now we see example. So students, we see the example. Find the evolutes of the parabola y square equal to 4ax. Okay, now find the evolutes of the given parabola. Now we know that we already seen in definition evolutes. How to obtain evolutes? Just by eliminating the values of x and y. Okay. So first of all, we consider here given curve. Given y square equal to 4x, that is a given curve. We denote it as equation number 1. Okay. अब हमें यहाँ पे evolute फाइंड करना है, तो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि evolute मतलब क्या होता है. जस्ट वी हैव टू एलिमिनेट x एंड y. अब देखो इसके लिए और हमें फॉर्मूले यूज करने हैं, दो फॉर्मूले x एंड y के फॉर्मूले, कैपिटल X एंड कैपिटल Y. अब देखो फॉर्मूला में y डैश एंड y डबल डैश है. And what is y dash? Y dash be the first derivative of y with respect to x, and y double dash be the second derivative. Okay. So first we differentiate. First we obtain y dash. So differentiate one with respect to x. हमें y dash find करना है. Y dash मतलब first derivative. So what is the derivative of y square with respect to x? It become 2y dy by dx. And what is derivative of right hand side? That is 4a. Okay, then dy by dx क्या बनेगा? That become 4a divided by 2a, 4a divided by 2y. So it become 4 by 2a upon y. That is dy by dx and nothing but y dash. So y dash equal to dy by dx is equal to 2a upon y. Okay, we get y dash. Now we have to obtain y double dash. So again we differentiate it. So again differentiate with respect to x. So we get derivative of y dash, that is, or derivative of dy by dx is d2y upon dx square is equal to, यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन y क्या आएगा? दैट बिकम -1 अपॉन y स्क्वायर into dy by dx. Okay, that is the derivative of
1 upon y, and it become y double dash is y d2y by dx square is nothing but y double dash. Y double dash इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2a अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस 2a अपॉन वाई स्क्वायर इंटू dy by dx, and what is dy by dx, that is 2a by y, so 2a upon y, so it become y double dash is equal to d2y by dx square is equal to, now minus as it is, 2a become 4a square divided by y square into y cube. So we get here y double dash and y dash both. Okay, now just apply the formulas and obtain the values of x and y. So capital X is equal to, क्या है फॉर्मूला, x minus y dash into 1 plus y dash square upon y double dash. Okay, now we put all the values here. So if we put the values, then we get, देखो अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक कैपिटल X इज इक्वल टू, कैपिटल X इज x minus, now y dash, what is y dash, y dash is here 2a upon y, 2a upon y into 1 plus y dash square means 2a upon y whole square, okay, divided by y double dash, and what is y double dash, that is minus 4a square upon y cube, minus 4a square upon y cube. Okay, so it become capital X is equal to x minus, now that minus and that minus become plus here, then 2a upon y as it is into 1 plus 2a by y whole square क्या आएगा, 4a square upon y square into 4a square upon y cube का रेसिप्रोकल y cube upon 4a square, and that minus and minus already हमने यहाँ पे प्लस कर दिया. Okay, so it become capital X is equal to x plus, हाँ अब देखो यहाँ पे 2a कैंसल, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे ये एक a रहेगा, देन y, यहाँ पे एक y कैंसल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, देखो y क्यूब that become y square divided by 2a simply यहाँ पे 2a, and in bracket taking LCM means y square, so y square plus 4a square divided by y square. Okay, then it become x is equal to x plus, अब देखो y square cancel, it become y square plus 4a square divided by 2a. Okay, then what we do, taking the LCM 2a, so after that LCM is capital X is equal to x plus y square, 1 minute, what is LCM, LCM is 2a, so LCM is 2a, x into 2a, so 2ax plus y square plus 4a square, y square plus 4a square. Okay, then it become capital X is equal to, क्या बनेगा, 2ax plus y square, and what is y square from given, y square equal to 4ax plus 4a square divided by 2a. Okay, then taking 2a कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, देखो 2a कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 2a कॉमन, सिंपली वी गेट x प्लस 2a कॉमन, so we get here remaining is 2x प्लस यहाँ पे भी 2a कॉमन, तो बचेगा सिंपली 2a divided by 2a. Now 2a get cancel, so remaining term is x plus 2x, 3x plus 2a, simply 3x plus 2a, because 2a get cancel here. Okay, then अब देखो हमारी कैपिटल X की वैल्यू हमें मिल गई 3x plus 2a, बराबर है, लेकिन हमें क्या करना है, ई उलट फाइंड करना है, ई उलट कैसे मिलेंगे, जस्ट एलिमिनेटिंग x and y, so we obtain here the value of small x, so small x is equal to here, अब देखो स्मॉल x क्या आएगा हमारा, स्मॉल x is equal to और 3x is equal to
x minus 2a. Keeping 3x as it is, taking 2a on the left hand side, x minus 2a. So x is equal to x minus 2a divided by 3. Okay, that is the value of x. Then we have to obtain the value of y. So y is equal to, now y is equal to, capital Y is y plus 1 plus y dash square upon y double dash. Okay, then capital Y equal to y plus 1 plus y dash. And what is y dash, student? Y dash is 2 upon y. 2 upon y whole square divided by y double dash. And what is y double dash? That is minus 4a square divided by y cube. Okay, that is our y double dash. Then अब हमें इसको सॉल्व करना है. Then capital Y is equal to small y plus minus then 1 plus 2a by y. It become 4a square upon y square into reciprocal of denominator, that is y cube upon 4a square. Okay, then it become capital Y equal to y minus, now just taking the LCM of bracket, it become y square. 2a upon y whole square is 4a square by y square. Y square plus 4a square divided by y square into y cube upon 4a square. Okay, then simplify it. Y minus, अब देखो y square and y get y cube, it become y. So y into y square plus 4a square divided by 4a square. Okay, then it become y is equal to y minus, y से multiply करो, y cube plus 4a square y divided by 4a square. Then it become, taking the LCM, 4a square y minus, throughout ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, माइनस y क्यूब माइनस 4a square y अपॉन 4a square. एक मिनट, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ओके ठीक है, कैपिटल Y. अब देखो 4a square y गेट कैंसल, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. सो व्हाट इज कैपिटल Y? कैपिटल Y इज नाउ, एक मिनट, कैपिटल X इज इक्वल टू x, स्मॉल x इज इक्वल टू x minus 2a divided by 3. Okay. So capital Y is equal to minus y cube divided by 4a square. Okay, then it become minus y square into y divided by 4a square. Y cube can be written as y square into y. So y is equal to minus, what is y square? Y square is 4ax into now y. Now what is y? देखो हमारा y क्या है, या तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ax. y स्क्वायर इज 4ax, देन y स्क्वायर y क्या आएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4ax. So here we write 4ax raised to the power 1 by 2. Okay, y square is 4ax, so y is under root of 4x, means 4x to the power 1 by 2 divided by 4a square. Okay, then it become capital Y is equal to, now minus sign keeping as it is. अब देखो न्यूमरेटर 4ax to the power 1 है, यहाँ
4ax टू द पावर 1 और यहाँ पे 4ax टू द पावर 3 1/2. तो बेस सेम है. If the base is same, then adding the power term is 1 plus 1/2. So we get here 4ax to the power 3/2 divided by 4a square. Okay. Then it become y is equal to now. और अब देखो हमें एक 2 रिमूव करना है. 2 रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Just we have to squaring on both sides. So squaring on both sides, then we get capital Y square is equal to क्या बनेगा? minus square become positive and it become 4ax to the power 3 divided by क्या बनेगा यहाँ पे? 4 स्क्वायरिंग किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? 6. 4 स्क्वायर 16 into a raised to power 4. Okay, just squaring on both sides. So here that 2 get cancelled and here 4a square means 16 into a to the power 4 and minus become plus. Then y square is equal to अब देखो 4 to the power 3 4 to the power 3 क्या आएगा? 4 क्यूब 16 into 4 64 into a cube into x cube divided by 16a to the power 4. Okay. Then it become y square is equal to 64 divided by 16 4 and a cube divided by a raised to power 4 become a 4 by a. And what is x? X is x minus 3a x minus 2a divided by 3 raised to the power 3. What is small x? X minus 2a by 3. Then y square, then it become 4 by a into, separate the power, that is x minus 2a raised to the power 3 divided by 3 cube is 27. So it become 27a y square is equal to 4 into x minus capital X minus 2a raised to the power 3. And that is which is the required evolutes of the given parabola. देखो यहाँ पे small x and small y eliminate हो गए, and which is the required evolute of the given parabola y square equal to 4ax. Okay, then we see the next example. So students, see the next example. Find the evolute of the curve x is equal to a into cos theta plus theta sin theta and y is a into sin theta minus theta cos theta. Okay. Now we know that in evolute what we do? We just eliminate small x and small y. अब देखो फॉर्मूला में y dash and y double dash है. Y dash means what is y dash? That is the derivative of y with respect to x. And y double dash is derivative of second derivative of y with respect to x. Okay. लेकिन यहाँ पे देखो x is a function of theta है. x function of theta. So what we get? We get here dx upon d theta मिलेगा. And y also function of theta है, तो हमें dy by d theta मिलेगा. बराबर है. तो dy by dx हमारा क्या आएगा? So dy by dx क्या आएगा हमारा? It become dy upon d theta divided by dx upon d theta. क्यों? क्योंकि x is a function of theta, so we get dx upon d theta, and y is a function of theta, so we get dy upon d theta. So what is dy by dx? Dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta.
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल which is our given curve, given. Now first we differentiate x with respect to theta. Now differentiate x with respect to theta. Actually ये पैरामीट्रिक फॉर्म है इक्वेशन का, जैसे कि हमें कार्टेशियन पोलर बताया है. कार्टेशियन मतलब इसमें सिंपली एक्स एंड वाई रहते हैं, वो कार्टेशियन रहता है. पोलर मतलब आर एंड थीटा रहता है, वो पोलर रहता है. और यहाँ पे x दो इक्वेशन है and both are the function of some variable that is called as parametric form. Actually parametric equation है. Okay, x differentiated with respect to x, then dx upon d theta is equal to, a is a constant, derivative of cos theta become minus sin theta plus, यहाँ पे देखो theta and sin theta both are the function of theta and derivative with respect to theta है. Then how to differentiate it? Just we use the product rule here. Theta first function as it is, derivative of sin is cos theta. Then second term plus sin theta as it is, derivative of theta is 1, so sin theta. First function derivative of second plus second into derivative of first. So dx upon d theta is equal to a into, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बचेगा यहाँ पे थीटा इंटू कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा. ओके, देन अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे क्योंकि हमें लगेगा ये आगे वाई डबल डैश के लिए. सो डी टू अपॉन डी एक्स डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट इट, ए एज अ कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन थीटा प्लस second function cos theta into derivative of first is 1. So here theta into minus sin theta plus cos theta into derivative of theta is 1. So then it becomes d2x upon d theta square is equal to, देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा a इंटू, सेकेंड टर्म पॉजिटिव है cos थीटा और फर्स्ट टर्म क्या है निगेटिव माइनस थीटा साइन थीटा. ओके, वी गेट dx अपॉन डी थीटा एज वेल एज d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर. ओके, एक मिनट फ्रेंड, इसकी कोई जरूरत नहीं है निकलने की. ओके, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. So simply we obtain dx upon d theta. Then differentiate y with respect to theta. Okay. Then dy by d theta is equal to, a as it is, derivative of sin theta is cos theta minus first function theta. देखो अब यहाँ पे केयरफुली करना, थीटा डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, सो थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इट इज 1. सो dy by d theta is equal to cos theta minus 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 plus theta sin theta, then plus minus minus cos theta. So here plus minus cos theta cancel, so dy by d theta become theta sin theta. यहाँ पे भी a है, a theta sin theta. Okay, we get dy by d theta and dx upon d theta both. Now we obtain dy by dx, and what is dy by dx students? That become dy by d theta upon dx upon d theta. So it become dy by d theta. What is dy by d theta? It is a theta sin theta, a theta sin theta upon dx upon d theta is a theta cos theta.
a theta cos theta. So a theta get cancelled, sin upon cos, tan theta, and that is our y dash. Y dash is tan theta. Now we obtain y double dash. Now y double dash is equal to, so y double dash means differentiate y dash with respect to x. देखो हमारे पास y dash है, हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, y dash को with respect to x से differentiate कर रहे हैं. So we get y double dash and that become d2y upon dx square. But here we have tan theta and tan theta is a function of theta. So derivative of tan theta क्या आएगा, sec square theta into derivative of theta with respect to क्या आएगा, x. Okay, then it become y double dash equal to sec square theta into dx upon d theta. Then we have d theta upon dx. बट हमारे पास वैल्यू कौन सी है, dx upon d theta की. What is dx upon d theta? dx upon d theta is a theta cos theta. देखो हमारे पास है dx upon d theta a theta cos theta, लेकिन हमें चाहिए d theta by dx. Means we have to take this in reciprocal. What is d theta upon dx क्या बनेगा हमारा, 1 upon a theta cos theta. Okay. So y double dash is equal to sec square theta and 1 upon a theta as it is, that is sec square theta into 1 upon cos theta become also sec theta. So it become 1 upon a theta into sec cube theta. Okay, that is y double dash. Now we have y dash and y double dash both. Now we use the formula, then obtain the values. Now capital X is equal to x minus y dash into 1 plus y dash square upon y double dash. Okay, now we put the values one by one. So here capital X is equal to x minus y dash. What is y dash? Y dash is tan theta. Tan theta into 1 plus y dash square means tan square theta, because y dash is tan theta. Tan square theta upon y double dash, that is 1 upon a theta. 1 upon a theta into sec cube theta. Okay, it become capital X equal to x minus tan theta. Now 1 plus tan square theta become sec square theta. Sec square theta upon sec cube theta into 1 upon a theta become a theta. Okay, then it become capital X equal to x minus, अब देखो यहाँ पे tan theta, tan theta sec square theta upon sec cube theta, that is sec theta into a theta. Now we put the value of x. So x is equal to capital X is equal to, now what is small x? Small x की वैल्यू क्या है हमारी, a into cos theta plus theta into sin theta. Okay, that is small x. So minus a theta tan theta. Tan theta is sin theta upon minus a theta tan theta अपॉन सेक थीटा. ओके, अब देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इंटू, अब दोनों टर्म में ए कॉमन है, ए इंटू कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए इंटू थीटा.
नाउ tan थीटा अपॉन सेक थीटा, tan थीटा क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, एंड 1 अपॉन sec theta is also cos theta. So it become capital X is equal to a into cos theta plus a theta sin theta minus a theta cos cancel sin theta. So what is capital X here? A cos theta. So capital X is equal to कैपिटल X इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, ए थीटा साइन थीटा कैंसल, सिंपली ए इंटू कॉस थीटा, ओके. नाउ सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड इज y. नाउ कैपिटल Y इक्वल टू y प्लस 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश, देन इट बिकम, just put the values, y is equal to y plus 1 plus y dash is tan theta, so tan square theta upon y double dash is 1 upon a theta into sec cube theta, okay. So it become y plus 1 plus tan square theta is sec square theta upon sec cube theta, 1 upon a का रेसिप्रोकल a theta, then it become y plus 1 of a theta as it is, sec square upon sec cube become sec theta. Now we put the value of y, small y. So capital Y is equal to, that is equation number 1 suppose. Now कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, स्मॉल y की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल y, प्लस सेकेंड टर्म क्या है, a थीटा अपॉन सेक थीटा, ओके. सो इट बिकम y इक्वल टू a साइन थीटा minus a theta cos theta plus a theta and 1 upon sec theta is cos theta. So see here a theta cos theta plus minus get cancelled. So y equal to simply a sin theta. Equation number 2. Okay. अब देखो यहाँ पे हमें इलिमिनेट करना है स्मॉल x एंड स्मॉल y, लेकिन इस एग्जांपल में हमें थीटा मिल गया. सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू इलिमिनेट थीटा. अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हाउ टू इलिमिनेट थीटा हियर. अब देखो हमें पता है रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. सो वी जस्ट ऐड एंड स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. देखो 1 में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग प्लस एडिंग प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नाउ इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, सिंपली ए स्क्वायर. देखो यहाँ पे एक्स थीटा भी इलिमिनेट हो गया, एक्स एंड वाई भी इलिमिनेट हो गए, and which is the required evolute of the given curve. हमारी कर्व पैरामीट्रिक में थी, लेकिन हमें जो इक्वेशन मिला है वो इक्वेशन किसका इक्वेशन है, वो सर्कल का है. मीन्स दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड विच इज द evolute ऑफ द गिवन कर्व. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच.